So I'm back with daily code log. Sorry for my inconsistency, but I shouldn't be this inconsistent. And my reading fell quite a bit. It took F2. It fell by 80, 60, and now I am at 1004 rating. It's pretty bad. That's one of the reason I didn't stream. But I think practice will help me overcome this. And still, this one's goal is reaching specialist. But I found it is stopping me from what is stopping me from reaching new levels is the fact that I cannot prove problems and I fall into the simulation trap where I try to find edge cases or predict test cases and um, assume something is correct and don't cross verify it. I don't have any solid proof that my solution works, and that is what I need to uh, improve on because I have decided to only solve constructive problems and then greedy, and I need to prove my strategy with maths. That's what my current strategy is. I need to prove what I'm doing using maths, and that will need practice. I hope this proving thing helps me do a massive jump because I don't find any problem thinking of data structures or the flow, but I have problem eliminating you know uh, strategies like this won't work. But I cannot say that confidently because I don't have any a solid background or maths to prove it. So my goal would be to uh, improve my proving game using maths, and that's what we will try today and coming days. Without wasting any more time, I have set the filter. I've set the filter to only constructive problems and this 1100 reading. Okay, why 1100 reading? Although I have solved problems around 1400 because I felt that I could only solve easy or other topics that are in the 1100 rating range, but I'm not doing the right thing because there are difficult problems also in 1100 rating, which thing you can see when I the constructive you can see to star mark means these are the problems I had problem solving. So yeah, as you as we are already late today, so we'll try to solve and prove two problems at least. And this was an advice from one of Enrique's video, was who is a legendary grandmaster. He said that if you are at a newbie or lower levels, not uh, that means below candidate master, you shouldn't spend more than 30 minutes wasting on single problem because that will be a waste of your time because if you're not experienced enough and you're spending a lot of time, then you're wasting instead of learning, and that will only um, yield same results but with more consuming more time than required. So in a way it felt correct. So today's strategy will be, if I cannot code something correctly or think or assume some this will work without any proof. If I don't prove it within 30 minutes, then I don't code it, then move to the solution. That will be the strategy. I need to prove my solution before I code. Okay, if you don't prove, you don't code,
and proving anything, you have a window of 30 minutes. That's the goal from now on. Okay, so let's start the timer. Okay, let's start the timer. So our 30-minute timer begins now. Okay, let's go. So first question will be this one, card game. Let's go. Okay, you are in card game C. Okay, okay. So okay, Alice, no, we don't need the story right now. We are heading towards the input, which is okay, 5000. Each test case consists of 2 lines. First line is the n, the number of cards, that means, which is from 2 to 50. These are the cards. Okay, the second line has the array, n characters, each either A or B, and ith character is A. If the ith character is A, then the card number I is initially given to Alice. A means index I card is given to Alice. Okay, and otherwise it's given to Bob. Okay, got it. Additional constraints on the input in each test case. Each test case, each T, at least one card is initially given to Alice. That means minimum the array will have at least one A and at least one B. So at least one A, one B रहेगा ही. That is why array का length is 2. So at least one A and one B रहेगा ही. Mandatory. Okay, great. Now for each test case output, test case output Alice if Alice wins by playing optimally, और B Bob if Bob wins playing optimally. तो Alice प्रिंट करना है या तो Bob प्रिंट करना है आउटपुट के जगह पे. ठीक है. It can be shown that if both players play optimally, the game will definitely end with a finite number of turns with one of the players winning. तो ऐसा नहीं कि tie होगा, it will win optimally. Okay. Thus, what is an optimal play? The game continues. The card number I beats card number J. Okay. If and only if I का value is more than J. With one exception, card I beats card 1 beats card N. This is one based indexing. Okay. Yeah. वन बेस्ड इंडेक्सिंग है यहाँ पे, और अगर कोई भी वैल्यू ज़्यादा हुआ तो वो छोटे वाले वैल्यू को बीट करेगा. मोर विन्स बट वन इज मोर देन एन. वन का जो कार्ड है, एक्सेप्शन कार्ड 1 beats card N. The game continues as long as each player has at least one card. कम से कम एक कार्ड होना चाहिए, और अगर empty hand हो गया then the game ends. Alice chooses one of her card and places it face up on the table. Okay. Bob
seeing Alice's card, chooses one of his card and places it up on the table. If Alice's card beats Bob's card, both cards are taken by Alice. Otherwise, both cards are taken by Bob. दोनों कार्ड ले लिया जाता है. A player can use a card that they have taken during one of the previous turns. तो जो भी अगर जीता है, winning cards can be played again. Player can use a card that they have taken during one of the previous turns. A player who has no cards at the beginning of a turn loses. First one with 0 card. First with 0 card loses. Okay. तो देखना है कि कौन 0 हो जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट विद 0 कार्ड लूजेस. ओके. एंड कंडीशन है ये. दिस इज एंड कंडीशन. ओके. नाउ okay. The player who has no cards will determine who will win if both play optimally. ठीक है. Now I have this A और B. A का size 1 है, B का size 2 है, which is N. Obviously Alice will win. ठीक है. Okay. B A Bob will win. क्योंकि नहीं, बॉब को 1 मिला है ना, 1 का वैल्यू ज़्यादा है. राइट. अगर ए बी है, ए बी है, देन ए बी तो एलिस को एक बड़ा विनिंग हैंड मिला है. बॉब ऐसा है, बॉब को एक स्मॉलर कार्ड मिला है, एलिस को लार्जर कार्ड मिला है. तो दिस वैल्यू इज मोर. ठीक है. सो ए Bob plays this card, which can be taken by this one. If Bob plays this card, it can be counted by this one. So, ठीक है. तो 1 can be taken by 1 beats N. Okay. तो N को तो कोई नहीं हरा सकता ना. N को 1 हरा सकता है, 1 2 हरा सकता है. तो if Alice gives this card, Bob ये देगा. उसके पास भी दोनों है, तो वो तो 2 देगा 1 को एंड करने के लिए. ठीक है. देन फिर एलिस देता है ये. ठीक है. which can be also cancelled by Bob. फिर नेक्स्ट जब एलिस का टर्न आता है, एलिस विल हैव नथिंग लेफ्ट. दैट मीन्स बॉब विन्स. तो ये जो तीसरा वाला है उसमें बॉब का वो है. दैट मीन्स दिस वन, इसमें भी बॉब है. एलिस जीता. ठीक है. बॉब का कुछ बट ऐसा भी है कि विनर टेक्स द कार्ड्स. राइट. तो इफ बॉब फेंकता है 1, बॉब नहीं फेंकेगा. फर्स्ट टर्न इज टेकन बाय एलिस. At the beginning of the game, some of these cards are given to Alice, the rest are given to Bob. So पहला move is done by I'll choose whatever cards and give. Alice takes the first thing. So Alice will give N and Bob will give what? ये. तो बॉब के पास सारा कार्ड चला गया. एलिस के पास कुछ नहीं बचा था. सेकंड में बॉब जीत रहा. ये भी एलिस दिया, ये बॉब दिया, ये एंड एलिस के पास सारा कार्ड चला गया. देन एलिस चलता है, बॉब के पास कोई कार्ड. ओके. नाउ ए बी हो गया. बी ए एलिस
अगर ये कार्ड खेल सकता है, ये कार्ड खेल सकता है. 1 2 3 4. Alice can play anything, so if it plays 4 it can be countered by Bob. Bob ले लेता 1 and 4. 2 लेता है तो 3 खेल सकता है Bob. ना फिर एलिस का टर्न है तो 2 देगा, Bob 3 देगा. वो आपके पास सारा कार्ड है. अब एलिस के पास एक एक कार्ड कमते जा रहा है, तो टोटल मूव्स equals to valid moves of the losing player. बट अगर मान लेते हैं कि इन सम ऑफ द केसेस एलिस विंस, मे बी यहाँ पे एलिस एक भी हैंड नहीं ले पा रहा है, बट Bob is taking the hand. So if Alice takes the hand, some cards will be aside which can be used, right? Okay, okay. So the number of cards are pretty low. That means we can do maybe n square. Okay. Okay. Now let's start the proving thing. Let winner be X. Okay. Now, okay, let's assume Alice is the winner. Let winner be Alice. We have to prove Alice cannot win. Prove Alice cannot win. और एक है let winner be Alice. Prove Alice can win. Whichever is easy, we can go with that. So if we try to prove that Alice cannot win, B, B, B and A, A. Okay, this is 1 2 3 4 5 6. Now big cards can cover up small cards, right? So if we show this numerically, then if I is more than J, if I is more than J, these numbers are converted to I, or these cards will be turned to Alice's card, right? Alice का card बन जाता है. We are proving कि Alice cannot win. So what is the win condition? Win condition is all cards become B, right? सब B हो जाता है. सारे को B करना है. Then what we can do कि Alice अगर इन तीनों में से कुछ भी चूज करे, जैसे कि 6 और 5 और 4 और 5 को काउंटर करने के लिए I don't have anything. But if 6 फेंका जाता है तो उसको हम बना सकते हैं what? ठीक है, 6 फेंका जाता तो I can turn it to my 6, and अगर 6 मेरे पास आ जाता है then I can win rest of the things. Need to have 6 and 1 to win all. ठीक है, 6 को हम बार बार यूज करके छोटे नंबर्स को हटा सकते हैं, 1 को यूज करके हम 6 को ले सकते हैं, राइट? बट बॉब के पास एलिस हैड 6, बॉब हैड 1, बॉब वांट्स 6, तो 1 को लूज नहीं करके ही विल ट्राई टू. तो अगर
if Alice throws a 4, we can sacrifice our 2. Okay, so okay, sacrifice. Okay, I want 1 and 6, right? तो अगर sacrifice करते हैं, then we will save Bob tries to have 1 and 6, right? So 1 करेंगे तो 6 and 6 करेंगे तो rest. This is a cyclic thing. Nobody can defeat. तो most powerful thing है 1 and n. Both should be mine. So if I know that I can win 6, then I know कि I win it all. Or if I have 6 and I know if I win 1, then I can win it all, right? Okay. तो मेरे पास 1 है बॉब के पास, so 2 is sacrificed by Bob and we will have Alice, then Bob, then Alice, then Alice, then Alice. Okay. फिर you can again use 4 to get this, right? तो B A A A A A and 6 बिना निकाले ही हम 1 को भी sacrifice करना पड़ेगा and officially I'm out of cards, right? So इसमें Alice has 1 and 6. Bob loses. Bob loses. लास्ट में Alice जीतेगा. देखते हैं जिसमें Bob जीतता है. जिस कंडीशन Bob has 1 and 6. Bob has 1 and n and it can win it all because 5 का हराने के लिए 1 चाहिए and 1 भी Bob के पास है. So कुछ भी फेंके Alice can be counted. Okay. Great. Now अब देखते हैं कि इसमें क्यों lose हुआ है. Because कुछ भी फेंके, I will not throw 6 because I have other numbers. But अगर मेरे पास कुछ big number होता, ठीक है, जैसे in this one तो ठीक है. But let's see this one BAA. तो अगर 2 फेंकता है तो भी 1 को कैप्चर कर लेगा. 3 फेंकता है, 3 तो नहीं फेंकेगा. 3 पॉइंट्स है तो सारा एलिस हो जाएगा. बॉब लूज कर जाएगा BAA वाले में. इसमें सारा A है. एक B. तो 1 2 3 4 5. नाउ n ही बचा है बॉब के पास. ओके एंड एलिस कुछ भी फेंके, बॉब विल टेक इट, राइट? सो फर्स्ट एलिस विल थ्रो एंड नोइंग दैट बॉब हैज जस्ट 5, तो एलिस 1 फेंकेगा एंड बॉब 5 फेंकेगा, तो ये एलिस का हो जाएगा. एंड एलिस हैज ऑल द कार्ड्स, तो एलिस विंस हियर. बॉब के ऊपर एलिस होगा एंड दिस विल आल्सो बी एलिस BABA. ठीक है. 4 एलिस हैज n and Bob has 1. तो क्या करेंगे, बॉब एलिस अगर 4 फेंकता है तो बॉब उसको कैंसिल कर देगा, ले लेगा एंड बॉब विन. So Alice will not throw that. If Alice throws 2, Bob will still capture it. Okay, and this becomes B. Now A के पास एक ही बचा and that can be captured 2 with 1, right? So how does the SE कैसे बना? क्योंकि मान के चलेंगे कि 2 केसेस, 2 केस बन सकता है. A candidate has both 1 and n, तब वो जीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, but if a candidate doesn't have that, both have each power card. So
क्या करना होगा, देन इट कम्स डाउन कि कैन एलिस रिटेन द पावर कार्ड्स, राइट। जैसे ये बॉब वाले में, दिस वन, ये BA में BA both had power card. Now Alice will try to save A, है ना, it's N, and क्योंकि Bob can counter it, but A can be used to counter any other cards. But अगर ये पहले ही फेंक देता है Alice, then it can be taken. तो अगर Alice throws a big card, then Bob catches it. But ये अगर उल्टा होता तो, जैसे मान लेते A and B, let's see, A and B, then Alice can throw one, तो बॉब ये फेंकेगा तो फंस जाएगा। एलिस नहीं जान सकता कि बॉब व्हाट विल बॉब थ्रो, सो इफ एलिस so having one by Bob is advantageous, क्योंकि एलिस अगर कुछ फेंकता है तो बाद में वो जान के फेंक सकता है बॉब, राइट। यहाँ पर एलिस के पास वन है, अब ही थ्रोज वन तो ये चला जाएगा, वन भी चला जाएगा, बॉब विल विन। तो टू फेंकता है तो टू भी चला जाएगा, ऐसा है। तो इसमें क्या, बॉब पहला काम एलिस होगा, एलिस का। एलिस हैज 2 and 4, बॉब हैज 3 and 5। इसको बेसिकली 5 बोल सकते हैं, नहीं बट इसको काटा जा सकता है, तो बेसिकली 1 and 3। तो बॉब 4 फेंक सकता है एलिस, तो ये उसको काउंटर कर देगा। एंड एलिस 2 फेंक सकता है, which can be countered by 3, right? Both moves can be countered. Okay, so what is the math here? Math is we separate the moves, कोड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे 2 and 4 हुआ, these are small, ठीक है, जैसे A B A B A B B A B, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए के पास क्या क्या है, ए के पास है 1, ए के पास 3 है, ए के पास 5 है, 6 है, ए के पास 9 है, बी के पास 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, 7 नहीं, 7 है, 8 है और 10। तो अगर एलिस फेंके 1, which can be countered by everyone, lot of people, countered by 4, 3 फेंके तो can be countered by 4, 5 फेंके which can be countered by 3, 6 फेंके which can be countered by 3, 9 फेंके which can be countered by 1, कुछ भी फेंके, that means पहले मूव में ही डिसाइड हो जाता है कि if a person can win or not, right? क्योंकि इसका सारा मूव can be countered, right?
तो मान लेते हैं कि एलिस को ये भी दे देते हैं, से 10 इज विथ, इसको 9 देते हैं, इसको 10 देते हैं, ठीक है। नाउ ये काउंटर किया जा सकता, सब काउंटर किया। 10 कैन नॉट बी काउंटेड बाय एनी, तो 10 अगर भेजते हैं तो ये कुछ भी भेजे, कैन बी टेकन 10 सबको ले लेंगे, इसलिए इट्स मैंडेटरी टू हैव 1 and 10। एंड अगर 1 है तुम्हारे पास, बट you can only protect 1 when 1 is protected. You cannot 1 कब protected, when 1 है, जैसे मान लेते हैं ऐसा 1, फिर B A B, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सो A के पास है 1 5 6 और B के पास क्या है, I have 2 3 and 7, right? So 1 can be counted by 2 and 3, 5 can be counted by 7, 6 can be counted by 7, so 1 can be counted by things. इसमें भी फिर the person having the big thing wins, although it has 5 6, ठीक है। तो ये कुछ भी बड़ा नंबर डाले, छोटा नंबर डाले, छोटा नंबर कैन बी काउंटेड बाय दीज, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि ए है, फिर बी है, या बी ए बी ए, तो 1 2 3 4 5 6। ए के पास क्या है, ए के पास है 3 है, 4 है एंड 6 है। बी के पास क्या है, 1 है, 2 है एंड 1 2 3 4 5। तो 3 कैन बी काउंटेड बाय 5, 4 कैन बी काउंटेड बाय 5, 6 कैन बी काउंटेड बाय 1। डन, दिस इज अ गुड केस। इसमें क्या है कि यहाँ पे person with 1 wins. Why? person with 1 इसलिए जीत रहा है क्योंकि कि 6 को छोड़ के I must have a number that is greater than if 1 then must have second largest, क्योंकि तभी हम उसका कुछ सारा मूव्स को हम कैंसिल कर सकते हैं और 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर उसके पास 5 हो जाता देन ही कुड हैव कैंसिल ऑल मूव्स, क्योंकि वहाँ 5 हो जाता तो 1 को कैंसिल कर देता, 2 कैंसिल कर, एवरीथिंग कैन बी कैंसिल, राइट। सो 1 है तो सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि देख 1 के साथ यू हैड या तो लार्जेस्ट या तो सेकेंड लार्जेस्ट, 2 के साथ लार्जेस्ट था, बट हाँ 2 है, या अगर 7 है, ठीक है, तो 7 क्या कर सकता है, इफ यू हैव, हाँ जैसे 5 है, अगर बॉब के पास, एलिस के पास लार्जेस्ट वगैरह सब है, still she loses because she makes the first move and all her moves can be countered, and 1 can be countered by these, 5 can be countered by this, so
Alice having one and second largest doesn't work, but Bob के लिए works for Bob, right? 30 minutes is up. I think I am very close. I will take more 5 minutes. If I cannot do, then move to the hint. Okay. ठीक है. तो what is the condition? Alice wins. इसमें भी everything Alice को win करने के लिए उसके पास सबसे smallest और सबसे largest उसके पास होना चाहिए. If you give the smallest to her with the second largest, doesn't work. If you give the largest to her, say hands are shifted and Alice has 2 3 7 and Bob has 1 5 6, then still Bob wins. Why? क्योंकि Alice 2 फेंकेगा, ये 5 या 6 फेंक सकता है, वो 3 फेंकेगा, 5 या 6 फेंक सकता है, वो 7 फेंकेगा, ये 1 फेंक सकता है. तो बॉब विन करने के लिए या तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए. क्योंकि उसके पास अगर यहाँ पे क्या हुआ, लार्जेस्ट मिल गया. बॉब को जीतने के लिए बॉब लार्जेस्ट आ जाए, जीत जाएगा. सेकंड मूवर्स एडवांटेज. ठीक है, बॉब को लार्जेस्ट मिल जाए, जीत जाएगा. अगर सेकंड लार्जेस्ट मिले, लार्जेस्ट तो चला जाए, तो फिर एलिस जीतेगी. एलिस का जीतना इज वेरी restrictive. Alice can only win if she has इसमें उसको फर्स्ट केस में we gave smallest to her, second largest to her, she didn't win. In second case we gave the largest to her, didn't win. Okay, and Bob had this. Alice needs both 1 and n to win. ठीक है. अच्छा, let's see इसमें. So in A and B, Alice had what? 1. Bob had what? N. So in this case, special case है, अगर बॉब को ये मिल जाता सेकेंड मूवर्स एडवांटेज, बट उसके पास कुछ और कार्ड्स नहीं है, राइट. ठीक है, तो 1 2 3 4 B A. Bob had 1, Alice had 2 and 3. Bob needs largest, सबसे बड़ा नंबर चाहिए उसको जीतने के लिए. तो बॉब का अगर सबसे बड़ा नंबर नहीं मिल रहा, he is losing, right? इसमें देखते हैं A B 1 2 3 4 5. So Alice had 1 2 3 4, Bob had 5. तो Alice कुछ भी डाले, इस केस में Alice wins, right? तो अगर Alice knows कि मेरे पास सारे कार्ड है, तो उसके पास एक ही होगा. So
मान के चलते हैं कि बॉब हैड 1, 3 and 4 and Bob had 2 and 5, राइट। तो अगर कुछ भी डाले इन काउंटर, 1 के लिए मेरे पास काउंटर है और 3 के लिए काउंटर है, 4 के लिए काउंटर है। सिंगल लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए, एक नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2, 3, 4 कुछ नहीं होना चाहिए, तो ओनली लार्जेस्ट डजन वर्क, ओनली लार्जेस्ट होगा तो डजन वर्क, बाकी केस में लार्जेस्ट हो चलेगा, सेकेंड लार्जेस्ट हो चलेगा। तो एलिस कंडीशन है या तो दोनों हो, या तो बॉब हैज जस्ट 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो, चाहे वो लार्जेस्ट हो स्मॉलेस्ट हो, डजंट मैटर, ओके, इट कैन बी काउंटेड, राइट। okay, I think I can do this, क्योंकि what is the proof, right? What is the proof? So here is the proof कि Bob always comes second, so Alice का possible win condition है to give Bob something of higher value, so Alice can have what? Alice का cards should be more than Bob's का card, right? Bob का card. So Bob can have anything. So Alice should be ready with values more than Bob. And it can be ensured that that can only happen if Alice has n, right? And Alice has n. And it can be shown that सिर्फ अगर n दिया जाता है, that can also be counted because Bob has that thing. So okay, मैथमेटिकली दिमाग में आ गया, बट मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए I will need little help. Okay, let's move to coding. This is the proof of problem. Here is the test case we have. Okay, we have n, and we have vector, and we इस पे हम लोग रीड करेंगे okay. We have taken the input. Now लिस्ट का जीतने के लिए 2 कंडीशन हो सकता है, या तो दोनों नंबर हो उसके पास, या तो बॉब के पास सिंगल नंबर। और int 0 I less than 10 I plus plus if check both auto check, ठीक है, check that will be checking कि if both cards available है या नहीं। तो यहाँ पे हम वेक्टर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, बार बार पास नहीं करना होगा। नाउ if एक ए के लिए होना चाहिए, राइट।
तो चेक करना है कि ए का है नहीं, तो इफ कैर सी, ठीक है, इफ v 0 equals to c and v n minus 1 equals to c, return true. Okay, great. नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ये चेक करके बता रहा है कि क्या है, ठीक है, ग्रेट। कि तो एक कंडीशन हो चुका है, तो इफ चेक ए, ठीक है, इफ चेक ए ट्रू आ गया, सी आउट, ठीक है, एलिस, ठीक है, न्यू लाइन, एल्स इफ बी का काउंट बी 1, सी आउट, एलिस विंस, एल्स सी आउट, बॉब विंस, राइट। तो काउंट के लिए एक लिख देते हैं, यहाँ भी कैर होगा और ये और लूप चलाते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। Did I again fell into a simulation trap? पता नहीं। 30 minutes और यहाँ पे 13 minutes। क्या बोल रहे? चेक एरर, conflicting declaration auto check, काउंट है। अगर बॉब के पास एक है तो एलिस होगा ना।
It's not a vector, it's a string. अब ठीक है, एक है हाँ, एक है, फिर दो है, एक है, एक भी है, फिर दो है, फिर लास्ट वाले में तीन है। आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पे हम बी ऐसे रख दिए और यहाँ पे ए ऐसे रख दिए तो let me check the answer. Also conflicting है, but that can be solved. है ना, एलिस है, तीन बॉब होना चाहिए। इसमें क्या है मेरे पास, एलिस के पास दोनों होना चाहिए था जीतने के लिए, और कंडीशन भी है। कुछ और कंडीशन भी है एलिस के पास जीतने के लिए, राइट। बॉब के पास अगर 1 2 3 है और 4 5 6 बॉब के पास है, एलिस के पास है, तो एलिस मान लीजिए छोड़ा तो उसके पास कुछ भी काउंटर करने के लिए नहीं है। बस ये एलिस करना है। बॉब के पास स्ट्रिक्टली लेस है एलिस से, तो भी एलिस जीत सकती है। हाँ, बॉब का विन कंडीशन है कि वो एलिस का सारा उस काउंटर कर ले, है ना। ये कम से कम 6 हथियार ले, बट यहाँ 6 हथियार पॉसिबल ही नहीं। एलिस का विन कंडीशन है कि ऑलरेडी इसके पास दोनों होना चाहिए, या बॉब के पास जस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम हथियार लेंगे सारा। बॉब के पास बॉब का जो सारा एलिमेंट है मेरे सारे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। मैक्स बी ले लेते हैं, मैक्स ए ले लेते हैं। बॉब के पास मैक्स एलिमेंट नहीं होना चाहिए बेसिकली। मैक्स एलिमेंट किसके पास है? साउंड नहीं, ई तो 0 है, तो अगर इंट में लेना हो i equals to 0, i less than n, i plus plus int x, या char x equals to vi। तो अगर ये है तो मैं ई
टू मैक्स और ई कॉमा करेंट एलिमेंट जो भी इंडेक्स है else if max e of Bob is less than max e of Alice, तब भी एलिस ही जीतेगा। बॉब के पास एक ही विन कंडीशन है, मैक्स अगर उसके पास आ जाए कैसे भी करके, बॉब का जीतने का एक ही कंडीशन है कि उसके पास मैक्स आ जाए, बट वो सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मैक्स और उसके साथ कुछ भी, तो बॉब जीत जाएगा। मैक्स, बॉब के पास कुछ भी मैक्स आ जाए जीत जाएगा, या तो फिर सेकंड लार्जेस्ट बॉब के पास अगर आ जाता है तो भी जीत जाता है मिन के साथ, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट उसका सारा कुछ काउंटर कर लेगा। और बॉब का विन कंडीशन क्या है कि बॉब कैन विन इफ इट हैज 1 and n और n minus 1, 1 and n minus 1, or if has n and anything else। n है, उसके बाद एक छोटा सा 2 है, कुछ भी फेंके, 1 फेंके तो हम 2 फेंक देंगे, और कुछ और फेंके तो हम उससे बड़ा नंबर देंगे, हम खत्म। सिंगल एलिमेंट होगा तो हार जाए, तो एक वही करते हैं ना, if b and n minus 1, right? जरा ये नहीं करते, चेक और int small bool small equals to false, bool लिखना होगा, so बस हमको देखना है कि अगर if v 0 equals to Bob, basically Bob has 1, check for n minus 1 to be Bob, and v n minus 1 equals to Bob, then n minus 1 is like n minus 2, तो Bob जीत रहा है। See out, Bob का विनिंग कंडीशन कम है, else if अगर Bob has n p n minus 1 equals to Bob, तो अब क्या करना है कि जस्ट देखना है कि if I have anything else for int I equals to 0, I less than n minus 1, तो n minus 2 तक जाएगा,
आई इक्वल्स टू बी, यहाँ पे सी आउट कर देंगे। और रिटर्न कर जाएंगे वो ओके। बट अगर सिर्फ तो सी आउट करना होगा। एलिस, ठीक है, न्यू लाइन। और ये दोनों कंडीशन में कुछ भी ट्रू नहीं है तो फिर एलिस सी आउट। एलिस ओके, देखें दिस वर्क्स। दिस इज मोर रोबस्ट बिकॉज बॉब का जीतने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, राइट। एलिस बॉब बॉब बॉब, दो एलिस फिर बॉब फिर एलिस, should not be single element। एक बार सबमिट करके देखते हैं। so much time on 700 is ठीक है, but I didn't prove ये भी proving this was not proving, because iterating accepted तो हो गया, but I didn't prove it, right? It got accepted, but this is not that great. This friendly node which I solved, I don't know what is its rating, but it was very but something a different kind which I can solve for prove, right? Okay, so this is done. I need to investigate on it a bit further, which I almost took 1 hour to solve this one, and that too I was simulating. I didn't have maths proof, so let's see what maths that they think of problems, errors, and how did they prove it. Need to prove this problem, right? There are many ways to solve this problem. I will describe one of the ways which doesn't use much casework. Okay. Take observation we need, and the key observation: if a player has a strategy that allows to make turns I, then he should have a strategy to the cards on I+1. There is no way to prove it. Any of them. There are two ways to prove it. Okay. The first way is to consider the options each player has. Where a player loses a card, they lose one of their options. Okay. When a player gains a card, they gain a new option for a card. So if a player can't take cards on some turn, then on the next turn their options are even more limited. An option will still be able to use all the cards they were able to use
n on the previous one. Okay. Second way is to consider if for Alice and Bob separately, if Alice can take cards on either turn no matter what Bob does, then she has a card which beats every card Bob has, and she will still has cards the next turn. Otherwise, if Bob can take cards on turn no matter what Alice does, then for every card Alice has, Bob has a card that beats it. That won't change on the next turn. So if a player can take cards on the first turn, they will win. That's what I inferred. पहले अगर turn में अगर they can take card, then they win. Okay. All that's left to check is who wins on the first turn. That's correct. Alice has a card that beats every card Bob has. She wins. Otherwise, Bob wins. Correct. So we read the input, then we read this. So how to matlab, okay, this is matlab sentence and these are some claims, and can claims serve as proof? See, if I have one problem, that's okay, but I don't want to. Not being able to prove my thought process will be wrong. So solving is not enough. You should be smart enough to prove it. And I think this problem will be considered solved if I solve it and prove it, or prove it and solve it. Anything works. Okay. So let's I take a quick break, and I will be back and solve this one. Basically, prove this one, and then we can move to the next question if time permits.
Okay, I am back. Let's prove the thing. Okay. Okay. Okay, great. Now let's prove this. Okay, what I understood from this is while solving, we will make many claims, right? That should go to the claims column, and beside it, there should be a proof column. Prove it using maths or constraints that it is possible, or whatever. If it asks for possible or if it says it's impossible, then we can prove it using math that it's impossible. Okay, now a big claim like Alice wins or Bob wins can be split into small claims. Proving the small claims proves the larger claim, right? Okay, this was my initial observation of like proving something. So in this case, in this problem where we were given the card game, first what came to my mind was first thing that came to my mind is is first thing by reading the question, first thing that came to my mind was if cards end, player loses, right? So what is the proof? Proof is proof is what is the proof? So if card end, player loses, because winner takes the cards, ठीक है, and loser loses them out of options. Your options reduce. Okay, so if cards end, no way to win or gain more cards. Game ends. Opponent wins. Right? This is the proof. So, by rule, if you lose your cards, your options are reduced, and eventually these options are added to your opponent, and slowly, if you don't win
you're out of options. And okay, so now this was the claim and proved it somehow. Now next claim was key. If next claim was key win condition, if all cards are claimed by somebody, then he's the winner. If all cards are belongs to one, that player wins. Same thing. If loser has no card, then winner will have all card. If loser has no card, winner has all cards. Count of cards invariant stays same, right? Count of cards is invariant. Great. Next, if a player sacrifices cards, doesn't work, right? Alice has 1 and 6. Bob loses. Two cases. A candidate has both the cards, both. So पहला केस में है if candidate has both the cards. Candidate has both cards. The candidate win because one can eliminate n or n, and n can eliminate everything more than one, है ना? तो सेम चीज़ है ना कि एवरीथिंग मोर देन वन कैन बी एलिमिनेटेड. 1 से लेके अगर n तक है तो n कैन एलिमिनेट एवरीथिंग up to here and 1 can eliminate this. तो cyclic dependency हो गया खत्म. So this is proven कि candidate has both the cards. Now the next claim was कि having 1 by Bob is advantageous. Bob has 1. Then what is the next claim? कि ठीक है. Then that second case is कि both can have the same card or either can have one of them. So if Bob has the first card, okay, Bob has the first card, and he can win. If one must have second largest, right? This is the claim. If Bob has 1 and n minus 1, Bob wins. This is a bold claim. That means कि one can eliminate n with Alice and n minus 1 can eliminate everything else.
right? So 1 can eliminate n, and n minus 1 can eliminate everything. So Bob wins. Right? Now if ये दोनों होना चाहिए, एक कंडीशन है, if कुछ कोई भी और कंडीशन हुआ which can be eliminated by LSN. अच्छा, दूसरा है कि फर्स्ट मूव में ही पता चल जाता है कि the first move decides the winner. फर्स्ट मूव डिसाइड्स द विनर क्योंकि अगर किसी के पास जो जीत रहा है he claims more and more cards, okay, and जब तक बोथ कार्ड अगर अपने पास नहीं आता तो you cannot win. ठीक है, the first move decides the winner. This is not a claim which I made, came to my mind. Okay, so we know that Bob wins if it has 1 and n minus 1. What another condition that Bob wins? Say if Bob doesn't have these two, तो अगर 1 नहीं है तो फिर 1 will उसके पास होगा तो उसके पास 1 और n दोनों हो जाएगा and it goes wrong. If it doesn't have n minus 1, then n minus 1 फिर सबको claim कर लेगा. सबको claim कर लेगा, that means 1 को भी claim कर लेगा, right? तो ये critical condition. तो बीच का कुछ भी नहीं हो सकता. I cannot miss this. 1 के साथ कुछ और पेयर नहीं कर सकते. These are the must. सिंगल एलिमेंट कुछ भी हो that can be cancelled by n minus 1. सिर्फ n minus 1 तो n cancel कर देगा. सिंगल एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल. तब अगर I have n then it can cancel anything, but 1 it can cancel it. So 1 is thrown first. तो अगर 1 पहले थ्रो किया जाए तो what should I have to cancel it? Anything else. Anything else works because it could be more than 1. Okay. This helps, right? Okay. I think I did a good job writing the, you see, easy. Okay, let's move to a different question and let's see if we can still prove it. What did Giantly do? Giantly, let's see, what did he do? Checks key if last one is B exactly, and count कि कितने सारे B's हैं exactly. तो अगर और एक B है तो फिर सारा B एक है तो एलिस जीतता, नहीं तो बॉब जीतता. exactly what I did. अगर I have A पहला वाला और second last is A, then exactly what I did. Crazy. So actually I'm quite happy with what I implemented, but not happy with the time. This was a good thing. Now let's move to the next that we can prove it, right? So this is the problem set. The card is done, which was a pretty difficult one. 16 isn't it only solve it.
Let's move to a vicious labyrinth problem. Okay. Vicious labyrinth. So let's try to solve this. The timer has started, and we'll try to prove it in 30 minutes and not code it. And I think that's the best approach because I coded it only after 30 minutes. My assumption was correct. Maybe I was lucky, but take it. Take that. First, read the question. Now we have t, which is 10 to the power 4, and we have n and k, which is and so the number of cells in the array can be 2 minimum and k can be 1. So number of cells and the labyrinth, okay, in the labyrinth, and the value k. This is a value. This is the cells. It is guaranteed that n cross all test cases does not exceed 2 into 10 to the power 5. That means we can have a very large test case जिसमें 10 to the power 5 है. एलिमेंट्स में वेरी लार्ज टेस्ट केस होगा जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स हो सकता है और बहुत सारा टेस्ट केस हो सकता है. इस गारंटी दैट द टोटल सम ऑफ n across all test cases doesn't exceed a single test case with a very large value and बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट केस with बड़ा बड़ा वैल्यू छोटा टेस्ट केस with बड़ा टेस्ट केस with छोटा छोटा वैल्यू. Now बस 2 नंबर है and for each test case output n integers output करना है, ठीक है, and the destination of the teleporters एक array output करना है in order satisfying the given condition, ठीक है. Value should be more than 1 but less than equals to n, and ai should not be I. So ai not equals to I. These are the constraints. This constraint will help me prove my stuff. Now, what is the destination of teleporters? So the labyrinth owner caught you in the act. What? In each cell there are initially exactly one person stuck in it. You want to help everyone get as close to the exit as possible by installing a teleporter in the cell I. teleporter का each cell, सब cell में एक teleporter है and every cell has a person. Only one person stuck in it. Every cell has at least one person stuck in it, and you want to install teleporters in each cell, which translocates the person in the cell to another area. जहाँ भी खड़ा है, it goes to a different location, right? Okay. So अगर
if teleporter is in I, person can go to AI index. अगर करंट इंडेक्स में वैल्यू है तो मेरे करंट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो इंडेक्स में जा सकते हैं. इंडेक्स टेलीपोर्ट टू AI जो कि मेरे करंट इंडेक्स का वैल्यू है. ठीक है. The Lebanese owner caught you in the act. Amuse lets you continue but under some condition. बोल रहा है ठीक है. You can do it but कुछ conditions है. अब ये more constraints आ जाते हैं जो कि constraints में लिखे. Everyone must use the teleporter exactly k times. K times. Exactly k times. Strict है. Not less, not more. No teleporter in any cell can lead to the small cell it is in. No teleporter in any cell can lead to the same cell. मतलब फिर infinitely घूमते जा रहा है. So I not equals to AI मतलब कि current value से बार बार 5 बार चला गया. Okay. Cannot jump to the same cell. Normally I not equals to AI. ये और एक लिखा हुआ था AI not equals to I. Constraints में लिखा हुआ था. तो ये लास्ट में है कि you must find a teleporter configuration. इस तरीके से मेरे को teleporters बैठाना है that minimizes the sum of distances of all individuals from the exit after using the teleporter exactly k times while still satisfying the restriction of the labyrinth owner. Find a teleporter configuration that minimizes the sum of distances of all individuals from the exit okay should be min in the exit after using the teleporter exactly k times. teleporter को k times यूज किया ना. डिस्टेंस भी कम होना चाहिए but still satisfying the restriction of the labyrinth. ठीक है. ओके चलो तो एक वो देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले टी टेस्ट केसेस है. ये सब तो ठीक है. आई हैव 2 and 1 which is कितना सेल्स है. व्हाट इज 1 एक बार ही एग्जैक्टली एक बार टेलीपोर्टर यूज करना है. तो क्या करेंगे. देयर विल बी पीपल हियर. सो in the first test case the position of each person is as follows. First before teleportation 1 and 2 था. ठीक है. फर्स्ट टेलीपोर्टेशन का 2 and 1 हुआ. The distance sum is 2 minus 2 plus 2 minus 1 equals to 1 which is the minimum possible. सेल है. बिफोर टेलीपोर्टेशन ऐसा है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ टेलीपोर्टर्स 2 और 1. यहाँ जो भी होगा
2 को भेजेगा या जो भी होगा 1 को भेजेगा। तो if someone has 2 will go to 1, right? If someone is at 2, and समझे नहीं? तो my initial position was 1 and I went to 2. अच्छा ठीक है, सेकंड में 3 है, 1 2 3। इनिशियली लोग इस तरीके से अरेंज्ड है। नाउ हाउ डू आई प्लेस द टेलीपोर्टर्स? तो अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं एंड यहाँ पे अगर हम बोलते हैं दिस विल पर्सन विल गो टू 2, देन दिस विल गो टू 3, द पर्सन फ्रॉम 3 यहाँ वो 2 में जाएगा, फिर वहाँ से आ सकता है। टोटल कितना बार यूज़ करना है? एक बार। तो 2 बार यूज़ करना है। पर्सन मस्ट यूज़ द टेलीपोर्टर 2 टाइम्स। पहले जंप किया, इट गोज़ टू अ लोकेशन 2, जो कि फिर उसको 3 में ट्रांसपोर्ट करके एग्जिट करा दे। ना फिर यहाँ पे कोई है तो वो फिर 2 में जाएगा, फिर उसको एग्जिट कराएगा। तो यहाँ तो क्या है, व्हाट इज इट? तो 1 2 3 में होते हैं। देन फर्स्ट टेलीपोर्टेशन, एवरीवन गोज टू 2, ये 2 पे होता है। this guy goes to 3, this guy goes to 2, which goes to 3, then it goes to 2. Now वो जो है, that person is now at 3 and this person is also at 3 and this person is at 2. Distance is, पहला बंदा जो है started from 3 and -3 हो रहा है, 3 - 2 हो रहा है, 3 - 3 हो रहा है। This is the minimum possible. Okay. That means the distance. So using the teleporter exactly k times, satisfying the restriction of the library. You must teleport and minimize the sum of the distances of all individuals from the exit. तो exit is, सबके लिए exit है 3. Now 2 बार ट्रांसपोर्ट करने के बाद सबका इंडिविजुअल पोजीशन होता है 3 2, राइट? क्या करना है कि how will sum reduce when max of
people are at n after k teleportation, right? Maximum. जितना भी पास करो. Now let's make a claim and proof. Now उन्हें चलो थोड़ा iterate करते हैं. Say in this one only 2 और 1 था, एक iteration करना था. So सिंपल है क्योंकि इधर वो यहाँ होगा या वहाँ होगा. Someone will be at the end and other will be at 1. ये तो fixed है क्योंकि they can juggle like that. And both cannot be at the same cell. Makes sense? I think both can be at the same cell. Because after iteration अगर वो teleport करके पहुंच गए, है ना? So how many at same cell? ठीक है. तो how many at same cell? This is a question. I will make a claim and then prove it, right? So how many at same cell? तो जैसे कि 2 और 1 है, we have 2 and 1. तो 2 और 1 है तो एक iteration के बाद we can send 2 to 1 then 2 to 2. ठीक है, मान लेते 3 iteration है तो फिर से कि ऐसा सजाया हुआ है. 1 goes to 2, फिर 2 से फिर 1, फिर 1 से फिर 2, another will be at the. देखते हैं. पहला है iteration 1 जिसमें कि it moves to 2 and 2 moves to 1. Now 2 यहाँ जो भी होगा it will move to 2 and other one will move to 1. फिर इसको वो करेंगे तो 2 1 ऐसा है. सेम ही है, डिस्टेंस कितना भी मूवमेंट्स कर ले 2 पोजीशन के लिए जिस मिनिमम. Now if we do 4 1 2 3 4, now we will try to keep as many as at 4. Okay. So we can create a loop to circle and finish iteration, right? So basically एक loop is a way to efficiently finish it, and the best way will be a loop between 3 and 4. So जो भी 1 and 2 में है, we can send them to the start of a loop. जैसे कि 3 go to 3 go to 3, 3 can go to the end and 4 can go to the start of the 3. This is the loop. Now if this is iteration 1 odd, now if it was even, then देखते हैं कि एक जन 4 पे है. ऑड ये यहाँ इवन होगा, देखते हैं क्या होता है. फिर iteration 2 we see कि अभी बहुत लोग 3 पे हैं
एक जन 4 पे है, 0 1 2 3 हो जाता है. Maybe it's optimal, maybe it's not optimal. You can send everybody to 4 and this to, or 4 4 3 4. We will do trade on this one. now 3 पे है तो नेक्स्ट मूव में क्या हो जाएगा, दिस विल गो टू 3, ये 3 पे है, ये भी 3 पे है, ये विल गो टू 4 4 4 4 3. तो इवन में हो जाता है मूवमेंट 1. ठीक है, और इवन मूव ऑल टू हेड स्टार्ट या लूप स्टार्ट. फॉर ऑड मूव ऑल टू लूप एंड. ठीक है, लूप एंड पे करने से क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 4 पे रहेगा, 3 3 पे रहेगा. ठीक है, तो वी कैन डू 4 4 4 3. ठीक है, सब 4 पे पहुंचा दिए, अब सब 3 पे जाएगा. दिस 4 ये गो टू 4 4 4. हाँ, सब 4 पे जा रहा है, दिस एंड इस पे 4 पे जाने पे सब 3 को भेज देगा. 4 पे जाने पे सबको 3 कर देगा. 3 3 3 एंड 3 3 पे गया तो 4 पे पहुंच गया, ये हुआ. तो for odd, keeping things at the loop end पे रखना is a good thing. n-1 पे रखना is a good thing. all n-1 and n-1 हो जाएगा n-2 for odd k. ठीक है, for even k, these are big claims, I need to prove them. So for even k thing, first we need to move to the start of the all should move to n-2 and all should move to n-2 and n-2 should move, n-2 में n-1 होना चाहिए. अच्छा, how to prove this? You're saying that this will give me the optimal answer. So looping has how many can end up in the same cell? n-1, because the last element n-1 can end up in same cell. Because why do you say that? Because you can set the teleportation to move to anything else than n. As ai is not equals to I, then we can move all ai not equals to I, that is n-1, to same I, and that leaves
ai equals to I to not go to same cell proved. कि n माइ नॉट है, नॉट इक्वल टू है, तो जैसे 4 पे 4 पे सबको भेजना है, तो 4 कैन नॉट स्टे एट हाउस बट एवरीवन कैन कम, राइट? दिस इज डन. इसका मतलब है एवरीथिंग कैन कम. तो विनिंग डिपेंड्स ऑन मैक्स एलिमेंट एट एंड ऑफ iteration to be at n cell. ठीक है, क्योंकि k इंटू n, ठीक है, माइनस n minus 1 into k will be equals to 1. ठीक है, इक्वल्स टू 0 क्योंकि सेल है. ठीक है, 0 और लास्ट एलिमेंट होगा विच विल बी एट माइनस n minus 1 विल बी 1. मिनिमम 1 अचीव कर सकते हैं. ओके, सो आई बिलीव कि फॉर odd k we should move to loop start, right? loop end. सही बात, because loop end पे रहेंगे and start फिर end, end odd, start even, end odd. So end whose minimum sum, that is good. For even we should start with loop start. So start odd, end even, start odd, end even. So when iteration ends, min will be always at the end, and that's proving it. Now you think the loop at n minus 1 and n is good? इसको प्रूव करने के लिए, because then every element, then n minus 1 elements are at one place and other one at other, maximizing the sum. Okay, let's do it. Let's read the question. Terminal sublime. Okay, 1 minute, I think I can prove it. I have n, then we have two elements n and k. We have two elements n and k. Just we need to check if a is odd, do something, a is even, do something else. If a is odd, then what do we need to print? If a is odd, then
everything for int I equals to 0, yeah, I1 and I less than equals to n I plus plus. Okay, everything is okay. Time is up, but for everything else we print n minus 1 and n minus 1 equals n minus 2. N is like n. For everything else we print n. If I equals to n, C out n minus 1. Okay, else C out n. Okay, if this is done, we print a new line and it's done. यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं अगर for everything else if I is equals to n minus 1, we print n, else we print n minus 1. I think the problem is considered done, and let's take another 3 and we have 4 here length, and we say let's take 2 arguments where the target is 4 and target is 5. Let's print this. Let's see what happens. Exactly 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2, and last thing is okay, this is not good. If this is k is even, print something. If k is odd, everything is n. Okay, and the second last element so if I is n, we print n minus 1, else what's happening, and if it's odd, then the last thing will be a smaller one, and
टाइपिंग मिस्टेक, चलो बच गए। ऑड है दैट मीन्स कि ये 3 है, एवरीथिंग विल गो टू 3 एंड 3 go to 4 and ऐसे ऐसे करके। For odd the last one should be second last, and for even the second last should be last. Okay, सबमिट करके देखते हैं। I believe this is a grouped one, so this can be considered not done. Okay. Accepted because it was grouped. So okay, so I think this claim and proof thing works. You can see I have this vivid claim and proof table. So every claim I should have a valid argument to prove it. Then we can move forward to construct the answer based on the claims. Okay, I think that's it for today. I'm glad that I could find I can say it's not the best, but I will iterate more questions and even difficult ones on this thing, and let's see if this strategy holds. And if this strategy holds and can prove helpful in more difficult problems. Indeed, it is slow, but it guarantees a correct answer, because I could do this problem in under 35 minutes. It's not bad, but solving 1100 in 35 minutes. Okay, so wait. Maybe these questions were easy. Proving them was a decision. So tomorrow's agenda, foolproofing this claim and proof system on 100 rigid problems. Let's see if this holds, and let's see if I can get guaranteed accepted. May take some time because more complex and the 1200 or 1300 problems. Okay, see you in the next one.